Let us discuss phosphine. Phosphine, the chemical formula is PH3. Actually, this is hydride of phosphorus, trihydride of phosphorus. So this phosphine is prepared in the laboratory by the treatment of calcium phosphide. This is calcium phosphide with water or with dilute HCl. So if we treat calcium phosphide with water, we can get calcium hydroxide plus PH3. This is phosphine. ये phosphine है. Similarly, if you take calcium phosphide plus dilute HCl, we'll get calcium chloride plus PH3. This is phosphine. So there is one more method by which we can prepare phosphine. It is prepared by heating. इसको हम prepare कर सकते हैं by heating white phosphorus. This is white phosphorus with sodium hydroxide, NaOH. This sodium hydroxide in an inert atmosphere of carbon dioxide. यहाँ पर हम रखते हैं inert atmosphere of carbon dioxide. यहाँ पर inert atmosphere of carbon dioxide. So the product is here PH3. This is phosphine. यहाँ पर ये phosphine है. We also get here NaHPO2. This is sodium hypophosphite. Sodium hypophosphite. Sodium hypophosphite. So this was about the preparation of phosphine. हम phosphine को कैसे prepare कर सकते हैं. जो ये phosphine है prepare करने के बाद जो ये phosphine होता है, it is actually अगर ये pure state में होगा, pure, if it is pure, अगर ये pure होगा, pure में ये होता है non-inflammable होता है ये, non-inflammable, but becomes inflammable. Inflammable when impure. That means it becomes inflammable due to the presence of P2H2 or P4 vapors. जो inflammable होता है कभी बनता है inflammable, it is because of the presence of this P2H2 or P4 vapors. Otherwise, if it is pure, अगर ये pure होगा फिर ये non-inflammable है. This phosphine PH3 जिसको हम बोलते हैं PH3, इसको हम purify कर सकते हैं. We can purify this phosphine. We can purify this phosphine by absorbing it in HI. यानी it is purified by absorbed in HI. यानी HI के साथ इसको ट्रीट करते हैं, ये उस पे absorb होता है. उससे क्या बनता है? If I write here, this is PH3. To purify PH3, it is absorbed in HI. इस पे HI पे ये absorb किया जाता है. So here we get PH4I. यानी phosphonium iodide बनता है यहाँ पर. Phosphonium iodide यहाँ पर बनता है. when it gets absorbed in HI, वहाँ पर ये phosphonium iodide बनता है. This phosphonium iodide then treated with KOH. इसको फिर हम ट्रीट करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ. यहाँ पर इसको हम ट्रीट करते हैं, we get KI, पोटेशियम आयोडाइड प्लस यहाँ पर मिलता है हमें पोटेशियम आयोडाइड प्लस फॉस्फीन प्लस यहाँ पर मिलता है H2O वाटर. सो दिस इज प्योर फॉस्फीन. ये होता है प्योर. यहाँ पर ये जिस pH3, दिस इज प्योर, ये होता है प्योर.
अब जो ये फॉस्फीन है, दिस फॉस्फीन इज कलरलेस, इसको कैसे पहचानिए, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस दिस गैस होता है। इसका जो स्मेल होता है दैट इज रॉटन फिश स्मेल होता है, इसका रॉटन फिश स्मेल, रॉटन फिश स्मेल। और ये हाईली पॉइजनस होता है, हाईली पॉइजनस, यानी जहरीला होता है। दिस इट एक्सप्लोड्स इफ इट कम्स इन कंटैक्ट विद ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, यानी इट एक्सप्लोड्स when it comes in contact with traces of oxidizing agents like HNO3, Cl2 or Br2 vapors. When it comes in contact with these oxidizing agents, it explodes. ये explode हो जाता है. So it is slightly soluble in water. Water में slightly soluble है this phosphine. अगर हम इसकी एक्वा सोल्यूशन लेंगे, इफ विल टेक द एक्वा सोल्यूशन ऑफ दिस फॉस्फीन, द एक्वा सोल्यूशन ऑफ दिस फॉस्फीन, दैट मीन्स फॉस्फीन एक्वा सोल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट डिकम्पोजेस टू गिव रेड फास्फोरस। ये हमें मिलता है रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस मिलता है, रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन मिलता है। It breaks, it decomposes in presence of light. This aqueous solution of phosphine decomposes in presence of light to give phosphorus, red phosphorus and hydrogen. This phosphine when absorbed in copper sulfate, when absorbed in copper sulfate or mercuric sulfate, copper sulfate or mercuric sulfate, sorry, mercuric chloride solution. When this phosphine is absorbed in copper sulfate or mercuric chloride solution, corresponding phosphides और फॉरवर्ड, यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड्स बनते हैं, यानी लाइक दिस इफ विल टेक PH3, इसको हम एब्जॉर्ब करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, सो विल गेट CuP2, दिस इज कॉपर फॉस्फाइड, यानी यहां पर हमें कॉरस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड बनता है, एंड वी गेट दिस, वी गेट Cu, so we get copper phosphide, यहां पर मिलेगा हमें कॉपर फॉस्फाइड and we get H2SO4, sulfuric acid मिलेगा। Similarly, if I take PH3 with mercuric chloride, we'll get mercuric phosphide. This mercuric phosphide, this copper phosphide, यानी cuprous phosphide है ये। This mercuric phosphide, यानी mercury phosphide. So plus यहाँ पर जो बनेगा that is HCl, यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। So these are corresponding phosphides. And if we absorb phosphine with copper sulfate and HgCl, we get corresponding phosphides. हमें मिलेंगे copper phosphide and we get mercury phosphide. This phosphine जो है, this जो ये phosphine है, this is weakly basic है, ये weakly basic like ammonia. जिस तरह अमोनिया होता है ना, ये अमोनिया जिस तरह वीकली बेसिक, इसी तरह फॉस्फीन वीकली बेसिक है, ये वीकली बेसिक है बिकॉज इट गिव्स फॉस्फोनियम आयन या फॉस्फोनियम कंपाउंड्स विथ एसिड्स। ये जिस तरह अमोनिया देता है अमोनियम कंपाउंड्स एसिड्स, ये देता है फॉस्फोनियम कंपाउंड्स विथ एसिड्स, that indicates it is basic nature, weak basic nature, like this is PH3 plus HBr, ये acid है, this acid, so it will give phosphonium, this is PH4Br, ये phosphonium bromide है, ये phosphonium bromide जो ये बनाता है, it is because this has basic character, ये acid है, ये basic character इसका,
ये देता है हमें ये फास्फोनियम दिस ब्रोमाइड, ये फास्फोनियम ब्रोमाइड देता है यहाँ पर ये. So one more this about this phosphine. Actually phosphine just like ammonia is weakly basic होता है. यहाँ पर जो phosphorus पे lone pair होते हैं, this lone pair makes this phosphine weak Lewis base, उसको ये weak Lewis base बनाता है इस phosphine को. This phosphine has important uses. One of the important use of this phosphine is it is used in Holmes signals. What is it actually in this Holmes signals? जो spontaneous combustion of phosphorus is technically used in this Holmes signals. In Holmes signals, actually यहाँ पर हम क्या करते हैं? जो spontaneous combustion of phosphorus is used here. Technically used here. How? Actually container containing, हम लेते हैं containers which contain calcium carbide plus calcium phosphide. Calcium carbide and calcium phosphide. ये मिक्सचर लेते हैं कंटेनर में. That container which contains this mixture is pierced. It is pierced and thrown in the sea. इसको हम समुद्र में फेंकते हैं. इस कंटेनर को हम उसको थोड़ा कर सुराख करते हैं, फिर उसको फेंकते हैं समुद्र में. When the gases evolved, वहां पर गैसेज जो इवॉल्व होंगे, जो जब वहां पर गैस इवॉल्व होंगे, बर्न हो जाते हैं and serves as signal, as Holmes signal. वो सर्व करते हैं, फिर वो जो वहां पर गैसेज जब बर्न होते हैं and they serve as Holmes signal. ये Holmes signal वहां पर सर्व करते हैं. So it is also used to make, for making smoke screens. हम बनाते हैं इससे, this phosphine. So this was about phosphine, that is trihydride of phosphorus.